Kerala State Legislature recently passed a resolution asking or urging the central government to change the name of the state from Kerala to KERALAM. This is the important news when it comes to exam because it directly relates to Article number 3 of Indian Constitution, or for that say we can say part number 1 of Indian Constitution. So from your exam point of view, this is important. So all of you must know about this news in detail from A to Z. We will be talking about everything in this related to this news. Stick with the video and just understand what the news talks are all about. So it is the Kerala State Assembly which passed the resolution recently urging the central government to change the name of the state from Kerala to KERALAM. They are demanding कि right now Kerala नाम है, इसको change करके KERALAM बना दो. This is the demand for which the State Legislative Assembly has passed the resolution. ठीक है? Now we will be talking about this entire news under the different headings, like for example what this resolution talks about. Resolution में ऐसा क्या लिखा गया है, क्या justification उन्होंने दिया है. Then we will be talking about the origin of the names like Kerala, KERALAM, ये दोनों नाम का क्या origin है. We will also talk about the procedure if the name has to be changed from Kerala to KERALAM. So what is the procedure, how this will be done, and who has the authority to do this. And finally, we will also see when this state of Kerala came into existence, when it was formed. Okay? So starting with the very first thing, what this resolution talks about. See, the resolution which is recently passed by this State Legislative Assembly or State Legislature of the Kerala, it says that the state of Kerala was formed on 1st of November 1956, right? On the linguistic basis. And what is that language on the basis of which it was created? It is Malayalam, right? See, during the India's freedom struggle, it was considered to be very apparent to unite the Malayalam speaking people for the Kerala's development, for the development of Kerala. Okay? So this is what the justification, or this is what resolution says. It says that uniting the people of Malayalam was considered important, right? And again, the state was created on 1st of November on the basis of on linguistic basis, that is, and the language on the basis of which the state was created was Malayalam, right? And the people are the Malayalam speaking people there. But despite this, the country is named as Kerala. And remember, this Kerala is a Sanskrit term. It is named as Kerala in the first schedule of Indian Constitution. So the resolution passed by State Legislative Assembly of Kerala, it simply says that we want the name to be changed from Kerala to KERALAM because the state is formed on the basis of language, because Malayalam is the primary language here, because common language is Malayalam, right? The base for the creation of the state of Kerala. So this state should be named, or should be named from the from the Malayalam term, right? And hence they have requested the Parliament Union government to pass the resolution to pass the bill under Article number 3 of Indian Constitution to rename the state from Kerala to KERALAM. This is what they have demanded. This is the resolution. Resolution ने simply अपना एक justification दिया है कि क्यों आप इसको change करने चाहिए. ठीक है? अब second चीज that we look at is the term Kerala, right? कि ये Kerala ये term कहाँ से आया? See, the Emperor Ashoka's rock edict from 257 BC. In this particular rock edict, the local ruler, जो आज केरला है ना, वहाँ का local ruler is termed or is referred as Kerala Putra, means the son of Kerala. ठीक है? And this Kerala Putra किसको बोला है? तो basically Chera dynasty का जो ruler था, उसको कहा गया है. And Chera dynasty was the prominent dynasty in this region. So Ashoka का rock edict from 257 BC. It is the earliest reference for this area. In this particular rock edict, the local ruler of that area is termed as Kerala Putra. Hence, this area is now referred as a Kerala. और ये संस्कृत term है. ठीक है? Okay. Now, talking about KERALAM, जो proposal है कि this state should be named as KERALAM. So what is this KERALAM? ये इसका origin क्या है? So scholars believe that the term KERALAM is originated from the term Cheram. Now what is Cheram? Cheram is actually a region between Gokarnam and Kanyakumari. So it is a region which is connecting Gokarnam and Kanyakumari, right? And then this the term chair means to join. So Cheram, when we say Cheram is the area which is connecting two different areas, that is Gokarnam and Kanyakumari.
right? Why this is called chairam? Because chair means to join, right? To join, and this area is what present day Kerala. So ये ही यहीं से, because चेरम है, चेरम से ही डिराइव किया है मलयालम टर्म दैट इज केरलम. सो दिस से ये इसका नाम केरलम होना चाहिए, दिस एरिया का नाम, ठीक है. सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस नेम केरलम, विच इज द प्रपोज्ड नेम फॉर द स्टेट ऑफ केरला. अब आपने ये देखा कि what is the justification. We also saw कि what is this the origin of the term Kerala and Keralam. Now let us talk कि what is the procedure, how the name of any state can be changed. ये change करने का procedure क्या है, ठीक है. So the procedure for renaming the state. Very first thing, it is article number 3 of Indian Constitution which authorize the parliament to change the name of any state or union territory. So power किसके पास है? Parliament के पास. ये clear हो गया. Talking about अब कैसे पार्लियामेंट ये नाम चेंज करेगा, दिस इज गिवन इन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. इट इज दिस एक्ट विच प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क कि कैसे ये नाम चेंजिंग का काम किया जाएगा, ठीक है. सो आर्टिकल 3 ने पार्लियामेंट को पावर दिया. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 ये प्रोसीजर बताता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर और द फ्रेमवर्क बाय विच दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी डन, राइट. दिस एंटायर प्रोसीजर कैन बी इनिशिएटेड एट द पार्लियामेंट लेवल और स्टेट लेजिस्लेचर लेवल, ठीक है. दोनों में से कोई भी कर सकता है, किसी भी लेवल पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग. सी, लाइक टेक एन एग्जांपल अभी का केरला वाला. वी हैव केरला स्टेट लेजिस्लेचर. केरला स्टेट लेजिस्लेचर ने एक रेजोल्यूशन पास किया. दे हैव पास द रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन क्या है? स्टेट का नाम केरला से हटा के भाई केरलम कर दो. दिस इज द रेजोल्यूशन, ठीक है. ये हम देख रहे हैं जब स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसेस को स्टार्ट करता है. द प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड एट ईदर ऑफ द लेवल, स्टेट लेजिस्लेचर लेवल या फिर पार्लियामेंट के लेवल पे. नो, स्टेट लेजिस्लेचर ने रेजोल्यूशन पास कर दिया अपने तरफ से. अब जैसे इसने पास करके बोल दिया, मतलब इसने रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई आप बिल पास करो अंडर आर्टिकल नंबर 3 और प्रोसेस को स्टार्ट कर दो. अब क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल बनाएगी. बिल under article number 3 of Indian Constitution. They will prepare a bill, right? This bill they will forward it to the president for his permission, right? प्रेसिडेंट के परमिशन के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट जब परमिट करेंगे तभी इसे लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा. एंड दैट परमिशन इज कॉल्ड रिकमेंडेशन. प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन मांगा जाएगा. नाउ व्हेन प्रेसिडेंट गिव्स द रिकमेंडेशन, देन मिनिस्टर, कोई भी गवर्नमेंट का मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर विल टेक दिस बिल टू ईदर लोकसभा या राज्यसभा. लोकसभा या राज्यसभा किसी भी जगह पे इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. नाउ अगर समझो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा विल पास इट विद सिंपल मेजॉरिटी, देन बिल गोज टू राज्यसभा, राज्यसभा विल पास इट विद सिंपल मेजॉरिटी. या फिर ऐसे हो सकता है कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया, राज्यसभा ने सिंपल मेजॉरिटी से पास किया, एंड देन बिल गोज टू लोकसभा, लोकसभा विल पास इट विद सिंपल मेजॉरिटी. Once both the houses pass the bill with simple majority, the bill goes to the president. ठीक है. Now bill goes to president. ठीक है. Now अच्छा, what about अगर दोनों हाउस ने पास नहीं किया, समझो लोकसभा ने पास किया लेकिन राज्यसभा बिल पास ही नहीं कर रहा है, या राज्यसभा ने पास किया लोकसभा पास ही नहीं कर रहा है. इन दिस केस क्या होगा? देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ जॉइंट सिटिंग. जॉइंट सिटिंग करवाई जाएगी. जॉइंट सिटिंग में बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ तो ठीक, पास नहीं हुआ तो यहीं पर चीजें खत्म हो जाएगी. इमेजिन करिए पास हो जाता है, देन बिल गोज टू द प्रेसिडेंट. नाउ प्रेसिडेंट हैज टू ऑप्शन, आइदर टू गिव हिज असेंट, ही विल आइदर गिव हिज असेंट और ही मे एक्सरसाइज वीटो. ठीक है. अगर उसने एक्सरसाइज वीटो कर दिया यानी साइन नहीं दिया तो ये प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जाएगा. और अगर साइन दे दिया तो क्या होगा? तो फिर बिल विल टर्न इनटू एन एक्ट and the state will stand to be renamed, right? जो naming है वो काम हो जाएगा. So this is the process when the process starts at the state legislature level. But on the other hand, when the process starts at parliamentary level, central government के level पे, तो देखो अब मैंने यहाँ पर state legislature कुछ भी लिखा नहीं, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ central government. ठीक है. चीजें central government क्या करेगी? Central government will first prepare the bill under article number 3 of Indian Constitution. They will prepare the bill. They will send it to the president, right, for recommendation. लेकिन president क्या करेंगे? President will first forward it to the state legislature. जो भी state legislature है उसको send कर देंगे. काहे के लिए? For its opinion. कि भाई नाम change करने के बारे में तुम्हारा क्या opinion है, right?
नाउ प्रेसिडेंट विल गिव सर्टन टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल 2 मंथ का टाइम दे दिया, या 3 मंथ का टाइम दिया, 6 मंथ का टाइम दिया, 1 मंथ का टाइम दिया, वॉट एवर टाइम इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, उतना टाइम दिया जाता है फॉर इट्स ओपिनियन, फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर्स ओपिनियन. Remember, I am saying opinion. Opinion. If they will have the opinion, if they have opinion, they will be providing it. If they don't have any opinion, obviously they will not be giving any opinion, right? But what about consent? Consent या नहीं मांग रहे. Consent is considered to be given. Consent माना ही जाता है कि दिया हुआ है. Consent कोई नहीं आपसे मांग रहा है, right? Now, जैसे ये टाइम पीरियड, अगर इसने ओपिनियन दे दिया तो बिल वापस प्रेसिडेंट के पास, अगर नहीं भी दिया तो भी जैसे टाइम पीरियड खत्म होगा तो बिल इज बैक विद द प्रेसिडेंट. Now president will give his recommendation. Recommendation का मतलब होता है permission for its introduction in either house of the parliament, right? Now once the president gives his recommendation, the bill is taken by minister. Minister will take the bill to the parliament, right? To the either house of the parliament. He may introduce either in the Lok Sabha or in Rajya Sabha. लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया तो लोकसभा विल पास इट विद सिंपल मेजॉरिटी, देन बिल गोज टू राज्यसभा, देन राज्यसभा विल पास इट विद सिंपल मेजॉरिटी. अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया तो राज्यसभा विल पास इट विद सिंपल मेजॉरिटी, देन बिल गोज टू द लोकसभा, फिर वो सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास कर देगा. वंस बोथ द हाउस पास इट विद सिंपल मेजॉरिटी, द बिल गोज टू द प्रेसिडेंट, राइट? लेकिन व्हाट अबाउट कि दोनों हाउस ने पास नहीं किया, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा पास नहीं कर रहा है, या राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा पास नहीं कर रहा है. इफ दिस इज द केस, तो इन दिस सिचुएशन वी हैव द प्रोसीजर ऑफ जॉइंट सिटिंग, राइट? जॉइंट सिटिंग होता है अंडर आर्टिकल नंबर 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यहां पर बिल को या तो पास किया जाएगा या पास नहीं होगा. पास नहीं हुआ तो प्रोसेस यहीं पे खत्म, और अगर पास होगा तो दे विल पास इट विद सिंपल मेजॉरिटी. Now the bill goes to the president. Now president has two options, either to give his assent or to exercise veto. याद रखिएगा, जब हम कभी veto डिटेल में पढ़ेंगे, then I will explain you कि there are 3 different types of veto that president has to exercise. I mean that president can exercise. अब भी के लिए सिंपल तरीके से मानिए कि veto का मतलब होता है साइन नहीं देंगे, और साइन नहीं देने पर पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे खत्म, ठीक है? और अगर प्रेसिडेंट ने साइन दे दिया तो इसका मतलब ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल विल टर्न इनटू एन एक्ट एंड द रीनेमिंग का काम हो जाएगा. दैट मीन्स जो भी वर्क मेंशन है वो वर्क हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस, राइट? द प्रोसेस कैन इनिशिएट आइदर एट द पार्लियामेंट लेवल और द स्टेट लेजिस्लेचर लेवल. किसी भी लेवल पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? The renaming of the state requires the parliament's approval under article number 3 of Indian Constitution because the bill is prepared under article number 3. Article 4 में लिखा हुआ है वो simple majority से simple procedure से पास होगा, इसलिए हम article 4 भी बोलते हैं, ठीक है? Now, the bill for renaming a state may be introduced in the parliament on the recommendation. Maybe क्या it is introduced in the parliament on the recommendation of the president. President का recommendation होगा तभी वो introduce होता है, ठीक है? Before the introduction, the president will send the bill to the respective state assembly for their view, for their opinion within the time period stipulated by the president. It is president जो time period देता है, ठीक है? When the period expires, the bill will be sent to the parliament for deliberation. जैसे वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, बिल वापस प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट के पास आ जाएगा और फिर पार्लियामेंट उसके ऊपर आगे का प्रोसीडिंग्स करना शुरू कर देगी, ठीक है? Bill need to be passed by simple majority. The bill is then sent to for the approval to the president. After the approval, the bill becomes a law, right? And the name of the state tends to be modified. ये केरला के कंटेक्स्ट में स्टेट का नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है? मतलब इस तरीके से. So we saw रेजोल्यूशन ने क्या जस्टिफिकेशन दिया, व्हाट इज मेंशन इन द रेजोल्यूशन. देन वी सॉ द ओरिजिन ऑफ द नेम केरला एंड केरलम, एंड देन वी आल्सो लुक्ड एट द प्रोसीजर. जो मैंने आपको लिखकर बताया था बस सिर्फ उसको ध्यान में रखिएगा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जॉइंट सेटिंग होगा कि नहीं होगा, प्रेसिडेंट वीटो लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है, कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस, कौन सी मेजोरिटी से पास होता है तो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है. इज देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन? यस, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन बहुत रिक्वायर्ड होता है. देन उसके बाद में हु हैज द पावर टू इंट्रोड्यूस, who will introduce the bill? Always remember it is the minister, any of the minister, hence it is a government bill, right? Because recommendation required है. Then उसके बाद में कि अगर प्रेसिडेंट उसको रेफर करेगा बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर तो कितना टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड होगा, तो एज डिसाइडेड बाय द टाइम प्रेसिडेंट. ये कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, 2 महीना 3 महीना. प्रेसिडेंट रेफर करने के टाइम पे बताता है कि भाई कितना टाइम पीरियड के उसने दिया है, ड्यूरेशन दिया है अपने ओपिनियन के लिए, ठीक है? सो दिस इज व्हाट. नाउ मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस न्यूज, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ केरला, हाउ द स्टेट ऑफ केरला केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है? सी, इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947. वी ऑल नो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, एट दैट टाइम देयर वाज अ ह्यूज डिमांड इन साउथ इंडिया फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और कल्चर.
लिंग्विस्टिक या कल्चरल बेसिस पे, स्पेशली लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट करने का बहुत हैवी डिमांड चल रहा था, बहुत भयंकर डिमांड चल रहा था, ठीक है। हैंस इसी डिमांड को फुलफिल करना है कि नहीं करना है, इसको है ना एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इसी को कंसीडर करने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बेसिकली किया ही जाना था, बिकॉज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड। हैंस इट वाज प्रेशर ऑन दी नेहरू गवर्नमेंट टू क्रिएट अदर स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सो ही क्रिएटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन द ईयर 1953। और फिर उसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया था 1956 में, ठीक है। एंड इट इज दिस एक्ट बाय विच, आई मीन यू कैन से दिस इज द एक्ट विच प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। सो आप देख रहे हैं 1947 में बहुत डिमांड था, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में बनाया, और इसी एक्ट के बेसिस पे 1 नवंबर 1956 को केरला बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे। दिस वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। और कौन सा लैंग्वेज? तो इट इज मलयालम, मलयालम लैंग्वेज, राइट। अब ये कैसे क्रिएट किया गया था? तो बाय मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रवंकोर एंड कोचीन विथ द मलाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। ये सारे एरिया में वन कॉमन लैंग्वेज बोला जाता था, दैट वाज मलयालम। सो ऑल दीज पीपल वर यूनाइटेड एंड द स्टेट ऑफ केरला वाज created. Now see, the state is created on the basis of language, but the term which is used to refer this area is Sanskrit term Kerala. So now this state of state assembly of Kerala, it is saying ki why to name, we are we want this area to be named or to be called from the Malayalam term, by Malayalam term, and that Malayalam term is Keralam. Okay? So the formation was the result of the linguistic and the cultural consideration, as Malayalam was the primary language spoken in the region. So Malayalam is basically the important language is spoken here in this particular region. So with this, we are done with this news, but remember for your exam what you are required to do. This is the news, everything related to the news, but along with this you need to do the static portion. And what is that static portion? It is part number 1 of Indian Constitution. You must know the part 1 of Indian Constitution. You must know the evolution of states in India and the chronology of the formation of the different states in India. With this much of thing, you are completely done with this particular news, right? That will be the holistic study. This is current affair. This is the dynamic section. That is the static section, which we do in polity. That is part 1 of Indian Constitution. Okay? With that, your complete study related to this topic is done. If you have any query related to this topic, do mention in the comment section. We will answer to your query. And till then, goodbye. Take care.